मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, एक्चुअली ये जो मेथड है ये भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मेथड है। जैसे पिछली क्लास में हमने मूविंग एवरेजेस देखा था, मूविंग एवरेज भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मेथड होता है, बट वो मेथड से ज्यादा बेटर रिजल्ट इस मेथड में मिलता है। अब ट्रेंड लाइन क्या बताता है? ट्रेंड लाइन एक्चुअल में ये बताता है जो हमारा टाइम सीरीज डेटा है उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, मतलब वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, या फिर किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इस तरह की चीजें पता चलती है। ठीक है, सो दिस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर विल हेल्प यू टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन ऑफ गिवन टाइम सीरीज डेटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक पर्टिकुलर कोई स्टॉक है, ठीक है, वो लिस्ट हुआ एक पर्टिकुलर टाइम पे। अगर आप लोग सबसे ज्यादा यूज इसका देखोगे ना ट्रेंड लाइन का, यूजुअली जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं स्टॉक्स या शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, वो लोग ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर शेयर। तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग इस ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं। उनके जो मोबाइल में टूल्स होते हैं उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर शेयर है, एक डीमार्ट का ही शेयर लेता हूं, अगर डीमार्ट का शेयर इनिशियली जब वो लिस्ट हुआ था 2017 में, उस समय उसका प्राइस था ₹300। ठीक है, लिस्ट होने के बाद धीरे धीरे उसका प्राइस इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होते होते कभी बीच में वो आ गया 600 पे, आफ्टर दैट एंड सो ऑन। और करेंटली अगर उसका प्राइस चल रहा है फॉर एग्जाम्पल ₹4000 पे, अभी उसका प्राइस चल रहा है करंट ईयर में, मतलब 2022 पे। ओके, इन बिटवीन देयर आर मैनी फ्लक्चुएशन। शेयर प्राइस एक लीनियर वे पे मूव नहीं कर रहा था, वो फ्लक्चुएट हो रहा था कर्व के शेप में। क्लियर? सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स वैल्यू इन द ईयर 2024, अगर मुझे 2024 में प्रिडिक्ट करना है कि वो उसकी वैल्यू उस ईयर में क्या होगी, तो क्या करूंगा? मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। अब ये जो लाइन रहेगी इसको ड्रॉ करते समय ये देखूंगा कि ये लाइन जो है बाकी सारी वैल्यू से मिनिमम डिस्टेंस पे हो। फॉर एग्जांपल एक्चुअल प्राइस और यहां पर देखो आपको डिफरेंस दिख रहा है। Similarly, here also there are some difference because the actual price of the share is not moving in a straight path. It is moving in a curve. So there are some differences between actual value and this trend line. So this difference should be minimum. And this minimum difference can be obtained by using this method, that is least square method. Okay? Clear? नैना क्लियर हुआ ये ट्रेंड लाइन और एक्चुअल प्राइस? और ओके, अब ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें कि मिनिमम डिफरेंसेस हो एक्चुअल वैल्यू और ट्रेंड वैल्यू पे? तो वो ड्रॉ करने के लिए कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है जो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, तो पहले तो मैंने ये लिखा है, ये मेथड जो है बेस्ट फिट ट्रेंड लाइन यूज करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। स्टेप्स क्या फॉलो करने? सबसे पहले ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आपने क्लास 10th में भी या 11th 12th में भी पढ़ा होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ m क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन का स्लोप, और c एक और कांस्टेंट होता है। x और y ये दोनों वेरिएबल होते हैं। सिमिलर वे में यहां पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसमें हम y को yt से रिप्रेजेंट करेंगे, और a और b कांस्टेंट होंगे, और ये हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अब यहां पर वाई टी का मतलब क्या है? ट्रेंड वैल्यू, वो वैल्यू को बताते हैं ट्रेंड वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहां पर ट्रेंड वैल्यू 300 थी, यहां 600 थी, वहां पर 4000। दीज ऑल आर ट्रेंड वैल्यूज, बट दीज ट्रेंड वैल्यूज आर ऑन दिस लाइन विच लाई ऑन दिस लाइन। क्लियर? ओके, यहां पर ए और बी ये दोनों कांस्टेंट्स होंगे जिनको हम निकालेंगे फॉर्मूले को यूज करके। फिर उसके बाद एक्स जो है, एक्स को ध्यान से समझना, इट इज डेविएशन ऑफ टाइम फ्रॉम ओरिजिनल, फ्रॉम ओरिजिन टाइम। ओके, या ओरिजिनल टाइम से डेविएशन। ये क्या होता है ये आपको आगे क्लियर होगा जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। ओके, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स के लिए हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एंड n इज मिड पॉइंट ऑफ द टाइम। ठीक है, जब डेटा यूज करेंगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये मिड पॉइंट ऑफ टाइम निकाला जाता है। वैसे n+1/2th टाइम जो होता है मिड पॉइंट होता है। ठीक है, फर्दर
ये सारी चीजें जो इसमें यूज होने वाली है. फर्दर, first we calculate, we follow these steps. The first step, we find the value of x, that is equal to ti minus mid value. Second, we calculate x square. Third, we calculate xy. Fourth step, we calculate all these summation. And in the fifth step, we find values of a and b. And in the final step, we put the values of a and b which are constant to this equation, and we will get the equation of line. Okay, so the final objective is to identify the equation of line which is best fitted in this curve or time series data. Okay, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. तो जो कुछ डाउट अभी तक रह गए होंगे वो भी क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्लियर हो जाएंगे. सो उसके लिए हम ओपन करते हैं एक्सरसाइज 11.3. एक्सरसाइज 11.3, इट इज इन पेज नंबर. हाँ बोलो. जो आपने बताया कैलकुलेट एक्स स्क्वायर, कैलकुलेट एक्स वाई, ये सब स्टेप्स है. हाँ, वो सारे स्टेप्स है. ओके, नोट कर लिया ना नैना वो. यस सर. हाँ, तो अगर कुछ डाउट है तो अभी एक क्वेश्चन के बाद वो क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऊपर में हेडिंग लेगा, फाइंड द लाइन ट्रेंड of the by the method of least square and tabulate the trend values from the following data. So first you have to do is you have to write the values in columns. So in first column you will write years. So first is 2004. Now the second one is 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, and 2010. Now the second is sales. Sales. So the second column will represent the sales in each year. So 26, again 26, next is 44, next is 42, next is 108, next is 120, and the last one is 166. Correct? सो ये आपको क्वेश्चन गिवन है. आपको दो काम करने हैं. आपको फर्स्ट काम क्या करना है, ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करनी है, ट्रेंड लाइन. एंड सेकंड आपको ट्रेंड वैल्यूज, ट्रेंड वैल्यूज, ये दो चीजें आइडेंटिफाई करनी. ओके ओके. सो स्टेप नंबर 1, जो मैंने यहां पर आपको स्टेप्स बताए थे, स्टेप नंबर 1 ये फर्स्ट स्टेप था. फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट एक्स. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्स. और कैसे कैलकुलेट होगा, टी आई माइनस मिड वैल्यू. और मिड वैल्यू ऊपर मैंने बताया, मिड वैल्यू ऑफ टाइम क्या होता है, एन प्लस 1/2. ओके, सो यहां पर एन, एन मतलब कितने ईयर्स पे हमारा कैलकुलेशन हो रहा है, 3 + 3 + 6 + 1 7. करेक्ट. So here n is equal to 7. In this question, n is equal to 7. Correct? So n plus 1/2 means 7 plus 1/2 means fourth year. So fourth year will be our mid time or mid value. So 1, 2, 3, and 4. This is our mid value. Correct? Is it clear? Naina? Shaibi? यस सर. Yes, sir. Okay, so we had identified the mid-year. Now we calculate x. So x is equals to ti minus mid value, that is 2007. Now formulate this column. Formulate this column. So in this column, the first value will be 2004 minus 2007. Correct? So it will be minus 3. The first value of x will be minus 3. Similarly, second value 2005 minus 2007. So it will be equals to minus 2. Next it will be minus 1. Next it will be 0. Next it will be 1, 2, and 3. It is similar to deviation which we have studied in class 10th. DI, if you remember the method to calculate the mean, step deviation method, assumed mean method, it is similar to that. We have assumed a mean, mid value, and we are calculating its deviation. Correct? Okay, so this was the first step. Now check out for the next steps. Now we have to calculate x square and xy. So further we again formulate two different table. The first table will be of x square.
So x square. So how we can calculate x square? Just square these terms. So it will be 9, it will be 4, next value will be 1, next value will be 0, next value will be 1, 4 and 9. Correct? Further, calculate xy. Further, calculate xy. Further, calculate xy. So to calculate xy, we will multiply these two values. Uh, just a second. Actually, this I have forgot to mention that this sales will be our y, correct? So this value is y. So just multiply these two terms. That is 26 into minus 3. So multiply 26 into minus 3. So 26 into 3, you will get minus 78. So this value will be minus 78. Next, again 26. This value 26 into minus 2. You will get minus 52. Next, 44 into minus 1. You will get minus 44. Next value will be 0. Next, 1048 into 1. You will get 108. Next, 120 into 2. You will get 240. Next, 166 into 3. Multiply 166 into 3. वैल्यू आएगी 498. ओके, सो ये स्टेप्स फॉलो हो गए, हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सम ऑफ एक्स वाई. अब ये सब कैलकुलेट करो. सो टू फाइंड द सम ऑफ एक्स, summation of x, summation of x. So here the summation of x is equals to 0. Summation of x square, summation of x square. So add all these things. It will be for 10 plus 4, 14. 14 plus 14, I think it is 28. Now summation of xy. Add all these things. Uh, sorry, one more thing. Actually, we have to calculate summation of y also. Just note down here that we have to calculate summation of y also. Okay, summation of y. Okay. So these things that we are finding out, it is trend line or trend value. No, currently it is neither trend line nor trend value. We have not reached to that point. Okay. These Yes. are the process to find trend line. Okay. So find the summation of y also. So 26 plus 26 plus 44 plus 42 plus 108 plus 120 plus 166. I think the sum will be 532. So this sum will be 532. Now summation of xi into y, x into y. So 498 plus 240 plus 108 minus 44 minus 52 minus 78. So this sum will be 672. Correct? So ये steps clear हो गए? नैना, शेबी? ओके. Yes, sir. इसके बाद ये फाइंड आउट करने के बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने. नेक्स्ट स्टेप क्या है? ए और बी की वैल्यू निकालनी है. तो ए निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये ए निकालने का और बी निकालने का फॉर्मूला है. ठीक है, अब ये ए और बी निकालने के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. ओके. So, but like you mentioned, A and B are constant. So, what exactly are Yes, these? we will get some constant or fixed values of a and b. They are constant. They used to used as a value for the line.
Okay, so we will find a. So a is equals to summation of y. So this is summation of y. Its value is 532. So the value of summation of y is 532. Now n. So the value of n was 7, because the calculation was on 7 years. So divided by 7. So 532 by 7, 5 7 ones are 7 sevens are 49, and 4 2 42, 7 6 are 42. So you will get 76. The value of a will be 76. Okay. Now, in a similar way, calculate b. So put the values of these two terms which we have got in the previous step. So the numerator will be 672 divided by denominator is 28. So again divide by 7, 7 fours are 7 nines are 63, 7 six are 42, 4 ones are 4 twos are 8, 4 eights are 16. So 28. So the value of B is 28. यहाँ तक clear, Shevi, Naina? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, now check what is the equation of trend line. So this is the equation of trend line. Okay, yt is equals to this. Okay, so use this equation, to draw the trend line. Sorry, to identify the equation of trend line. So यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर दो. सो yt इज इक्वल्स टू a. तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 76, प्लस b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 28, और इसके क्या लिखा हुआ है x. सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछा था, ट्रेंड लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, तो ये ट्रेंड लाइन की इक्वेशन है. क्लियर? सो बुक में देखो, चेक करो, फर्स्ट पार्ट में ट्रेंड लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई आंसर में, जस्ट उसी के पेज के नीचे. नैना हो गया ना यहां तक? सर बट बुक में आंसर 24x है. 24 है क्या? मैंने कुछ गलत किया क्या यहाँ पर? हाँ, ये मैंने डिवाइड करने में गलती की ना. फोर Yes, sir, it will be 4 20. to z, it will be 24. Yes, correct, it is 24. So the value of b is 24. Yes, so this value is 24. 24x. ओके, ठीक है. अभी आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे. Yes, sir. For the second part we Sir, have E and B are the trend values, no? which one? A and no, A and B are not trend values, they are constant. For the second part we are starting for the trend values. So trend value calculation is pending right now. Now to find trend value, the trend equation was yt is equals to 76 plus 24x, correct? Now what you have supposed to do, put the value of x, from here. So for the first case the value of x is -3, so put -3 right over here in place of x, correct? So the first trend value will be 76 plus 24 into -3. Now you will get some value of y. Calculate this. I think you will be getting 24 4. into 3, 4. Okay, so the value is 4, correct? Now this 4 is trend value, correct? Similarly, for the next also calculate another trend value. For that, you will put x is equals to -2. So the next value will be 76 plus 24 into -2. क्या मिलेगा इसमें? कैलकुलेट करो. 76 plus 24 into -2. You will get 28. I think it is 28. Check. आ रहा है 28? Yes, sir. Similarly, for the third one, it will be 76 plus 24 into -1.
So it is basically 74, 76 minus 24. I think its value is 52. And for the next, its value is 76, and so on. Similarly, calculate all other values. And you can match with the table which is given in answer. So you can see the trend values which is given in the table, correct? 148. तो क्या ये समझ में आ गया क्या करना है? तो दो स्टेप्स आपको करने हैं, दो चीजें आपको निकालनी है, एक तो इक्वेशन, दूसरी वैल्यूज। वैल्यूज निकालने के लिए सिंपली आपको एक्स की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। ये बन जाएगा, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir, so only this much will have to do in all these questions. yes, for all these questions. So, like this will be the process now, solving all these questions. Yes, exactly same process will be followed, but just one difference will be there in question number 4. Also, I think in question number 336, question number 4 and 5 has little bit different as compared to this. So let's start with question number 4, I think. Okay, one last question we can solve. Only a small difference is there in that. So question number 4 start करें, Naina? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे फर्स्ट कॉलम ईयर है, सेकंड कॉलम जो आपको दिख रहा है वो क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट। और ये एक्चुअल में आपका वाई है, ठीक है? प्रॉफिट मतलब वाई है। ओके, सो ईयर कौन कौन से मेंशन है यहाँ पर? 2005 ऑनवर्ड्स। फर्स्ट इज 2005, नेक्स्ट इज 2006, नेक्स्ट इज 2007, नेक्स्ट इज 2008, नेक्स्ट इज 2009, नेक्स्ट इज 2010। ओके, सो आप लोग बताते जाओ फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था? अच्छा, ये To write by. जस्ट वेट ना, 5, 7, 9, 10, 12 एंड 17। हाँ, क्या बोल रहे हो फर्स्ट स्टेप? So now we will find x. X. So how we find x? X is equals to Yeah, that will be n plus 1 by 2. x is equal to ti minus mid value, correct? So Okay. before that, to find. Yes, before that we find n. So Yeah. here n is equals to 6. Okay, so now we find n plus 1 by 2, n plus 1 by 2th term. So it is 6 plus 1 by 2th term, that is equals to 3.5th term, correct? So which one is 3.5th term? So we got third term and fourth term. So which term will be called as 3.4th term or mid value? So So 2008. yes, So like can we consider 2008? no, we cannot consider 2008. It is the mid value of time. So mid value between 2007 and 2008. So we will consider it as 2007.5. Okay. Yes. So like day before yesterday when we were solving that 4 year um, table, so in that in the examples instead of taking the 0.5 they have taken the other number, the other row. So here also we can't consider like that. No, actually, we are considering the mid value of time. So, in this type of case, we will consider the mid value of time because time can be in fraction here. That's why. Okay. So, based on this, we will calculate x. So, the first value of x will be minus 2.5, correct? Second value will be minus 1.5. Third value will be minus 0.5. Fourth value will be plus 0.5. Next value will be 1.5. Next value will be 2.5. Is it clear? Okay. Now, after this, we have to calculate few more columns, that is x square and then xy. Okay. So x square, square of this you will get 6.25. Square of this you will get 2.25.
Square of this, you will get 0.25, again 0.25, 2.25, and the last will be 6.25. Clear? Now calculate x into y. So multiply these two terms in order to calculate the next value xy. So 2.5 into 5, I think it is 12.5. Yes. 2.5 into 5. Yes, 12.5. So yes, it will be minus 12.5. Next, 7 into 1.5. It is 10.5 minus 10.5. Next, 9 into minus this. So you will get minus 4.5. Next, uh, 10 into zero point 0.5, you will get 5. Okay. Next, 12 into 1.5. So 12 into 1.5, it will be 18. Next, 17 into 6.2 into 2.5, you will get 42.5. 42.5. Okay. Now calculate summation of y, sum of the this column, sum of this column, uh, also sum of this column and sum of this column. Okay. Summation of x square and summation of xy. So 5 plus 7 plus 9 plus 10 plus 12 plus 17. The sum will be 60 for this first column. For the next column, it is 6 plus 2 plus 2 plus 6. Sir, in exam, The- such direct questions will be asked. yes, 17.5. For the next, it is 18 plus 5 plus 42.5 plus minus 12.5 minus 10.5 minus 4.5. It is 38. 38. Okay. Now, further, we have to calculate A and B. So the formula to calculate A is summation of y divided by n. So here summation of y is 60 divided by n is 6. So you will get 10. So the value of A will be 10. Okay. Now we have to calculate B. So the formula to calculate B is summation xy divided by summation x square. Okay. So summation of xy is 38 divided by summation of x square is 17.5. So 38 divided by 17.5, sorry, 38 divided by 17.5, you will get around 2.17. 2.17. Yes. Okay. Now, after calculation of this, we will use the equation of line, that is yt is equals to a plus bx. Now, put the value of a and b which we got here. Okay. So, yt is equals to 10 plus 2.117x. So, this is our trend line equation. Now, in order to find trend values, we will use this equation, 10 plus 2.17x. Now, further you can solve this. So, the first value will be yt is equals to 10 plus 2.17 into the value of x is minus 2.5. So, the first value will be uh,
10 minus 2.17 into For these trend values, we will make another column. Yes, another column you have to make that for that. So this value is 4.575. Similarly, for the next, yt is equals to 10 plus 2.17 into minus 1.5. So 10, सर, हाँ बोलो। इसमें ग्राफ बनाने आ सकता है? इसमें ग्राफ बनाने का चांस नहीं है आने का, बट अगर इनकेस आता इनकेस आता है तो कैसे बनेगा मैं बता दूंगा आपको ग्राफ इसका। ठीक है, वैसे तो नहीं आएगा ग्राफ बनाने के क्वेश्चंस, एंड सो ऑन। बाकी सारी वैल्यूज भी सिमिलर वे पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट वैल्यू वी द गिवन आंसर विच इज गिवन इज 8.91। The next value is I think 11.09 and so on. Okay, तो क्लियर है ये कैसे बनेगा? Yes, sir. ओके यस सर। ओके, तो इसमें और कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज एक और। Yes, sir. सर और कौन सा है? इसके बाद ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर 12 है, परपेचुइटी सिंकिंग फंड्स एंड बॉन्ड्स एंड ईएमआई। इसमें भी एक कुछ डिलीटेड है, चैप्टर 12 स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद। कर दूं मैं स्टार्ट? 12.3 डिलीटेड है। 12.3, हाँ 12.3 डिलीटेड है। चलो यार इसको एक Bonds, this topic is not there. बॉन्ड इज डिलीटेड, यस। Stocks and shares also, chapter number 13 after that. Yes, chapter number 13 is completely deleted, and in this chapter, chapter 12, 12.3 is deleted. Other 4 exercise are there. Other 3 सर, exercise. हाँ बोलो। in exercise 12.4, question number 8, 9 and 10 has been deleted अच्छा, okay, according to our school teacher. okay, I will check those questions. Sir, in which exercise? 12.4, नैना कौन कौन से क्वेश्चन बोले Sir, 12.4 I से? also wanted to ask this. In this amortization of loans, we have to prepare or not? Because in sample paper, they have not given. Okay, I will check those questions before starting with that exercise. Okay. Yes, sir. ओके, सो ये वाला टॉपिक हो गया, हटा दो इसको। मैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस बन जाएंगे ना? Yes, sir. ओके, सो स्टार्ट कर दे, परपेचुइटी एंड सिंकिंग फंड्स, चैप्टर Yes, sir. 12। ओके, सो चैप्टर 12 ओपन करना, चैप्टर 12। इसमें हम सबसे फर्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो है परपेचुइटी। ओके, नाउ व्हाट इज परपेचुइटी? मैं कुछ पॉइंट्स इसमें नोट डाउन कर लेता हूं, आप लोग भी अपने नोटबुक में कर लेना। सर, हम्म, इसके बाद हमारे कौन कौन से चैप्टर्स बचेंगे? इसके बाद चैप्टर 12 होने के बाद आई थिंक ये एक ही चैप्टर बचा है, चैप्टर 14, रिटर्न ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। प्रोबेबिलिटी। Sir, number inequalities also. विच वन? प्रोबेबिलिटी, यस। यस सर। हाँ, And chapter 2. चैप्टर 2, हाँ करेक्ट, चैप्टर 2 इज आल्सो पेंडिंग। और प्रोबेबिलिटी भी पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए थे, एक बार फिर से उसको कर लेंगे। ठीक है, 14 करने के बाद देन वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 2, आफ्टर दैट वी विल डू द प्रोबेबिलिटी। ओके यस सर। ओके,
सो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग इधर पे इसको ध्यान देना, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, आपकी बुक से ही देख लो या तो एक बार। परपिचुटी इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ एनिटी, मतलब जिसमें हमको एनुअल एक इनकम मिलेगी, फिक्स्ड एक हम कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, तो उस टाइप की सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज है, मैं उसको डिपॉजिट कर देता हूँ फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उसको विदड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, और हर एनुअल पे या हर क्वार्टर पे या हर हाफ ईयर पे मुझे कुछ उसका इंटरेस्ट मिलता है, दिस इज कॉल्ड परपिचुइटी। क्लियर? अब इसमें दो टाइप हो सकते हैं परपिचुइटी के, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 652 पे देखना, उसमें जो आपको थर्ड पैराग्राफ दिख रहा है, एज पर द टर्म परपिचुइटी इज इनफाइनाइट सो द अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपिचुइटी इज नॉट डिफाइंड। सो अगर इसका जो टेन्योर होता है इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होता है, तो इसमें इसका जो क्या बोलना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर अमाउंट क्या होगा ये निकाल नहीं सकते। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, टू टाइप्स ऑफ परपेचुइटी, वन is which the payment is made at the end of each payment period, and other which the payment is made at the beginning of each payment period। मतलब दो टाइप की परपेचुइटी कैलकुलेट करते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप में हम जो पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड कैलकुलेट करते हैं, और सेकेंड टाइप की जो परपेचुइटी होती है उसमें हम बिगिनिंग पे ही वो पेमेंट जो है परपेचुइटी अमाउंट वो कैलकुलेट करते हैं। ओके। हाँ नैना बोलो। सर, परपेचुइटी एक इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये बोल सकते हैं परपेचुइटी क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह की एफडी समझ लो, अगर हम एफडी पे डिपॉजिट कर रहे हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब वो इनफाइनाइट टाइम के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमेशा जो हमको पैसे मिलते रहेंगे, वो जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड परपेचुइटी। जो जो यस सर। इंटरेस्ट मिलता रहेगा वैसे अमाउंट को परपेचुइटी बोलते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 लाख रुपीज किसी इंस्टीट्यूशनल को डोनेट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो उससे उन स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को हमेशा के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते रहे, तो क्या करेंगे, वो 10 लाख एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है परपेचुइटी जो है उसको डिपॉजिट कर देंगे, उसका जो इंटरेस्ट आएगा उस अमाउंट को हमेशा एज ए स्कॉलरशिप देते रहेंगे हर साल। तो ये एक इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक चलता रहेगा, इस तरह का प्रोसेस। ठीक है। यस इसमें सर। जो फॉर्मूला जो है, जो टर्म्स है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो परपेचुइटी अमाउंट जो है उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो आपका रेट मिलता है आपको, जो रेट आर मतलब क्या है, पीरियोडिक पेमेंट बोल सकते हैं इसको, उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आई जो है आपका इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो इसमें नोट डाउन कर लो। पी जो है, पी क्या है, पी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअलिटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअलिटी। ओके। नेक्स्ट आर है पीरियोडिक पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट। एंड आई इज आई इज आर अपॉन 100। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको R% पर ईयर की एनुअलिटी वो दे रहा है पर ईयर, तो ये इससे रिप्रेजेंट होता है। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये उस केस में आएगा जब आपकी टाइप 1 परपेचुइटी हो। टाइप 1 मतलब कि व्हेन पीरियोडिक पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड 1, व्हेन व्हेन पीरियोडिक पेमेंट is done
is done at the end of फर्स्ट पीरियड. ओके, ये होगा टाइप 1 परपेचुइटी. सेकेंड जो है फॉर्मूला टाइप 2 परपेचुइटी का, वो देख लेते हैं. सो टाइप 2 परपेचुइटी, in this case, when the payment is done from the beginning, ओके. सो इस केस में जो परपेचुइटी का फॉर्मूला होगा, P इज इक्वल्स टू R प्लस R अपॉन I, ये फॉर्मूला यूज होगा. ओके, तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने, और ये दो केसेस आपको ध्यान में रखने. फर्स्ट, व्हेन द पेमेंट इज डन एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड. सेकंड, व्हेन द पेमेंट इज डन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट पीरियड. क्लियर? ये नोट डाउन कर ले, स्टार्ट करें एक्सरसाइज. नैना, शैवी, हो गया ये? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1. Sir, what about 12.1? 12.1 क्या बोल रहे हो नैना? Sir, why we are starting from 12.2? 12.1. We will start with 12.1. Okay, so the first question says that find the present value of perpetuity. Present value of perpetuity means you have to find P. Okay, P is equals to question mark. Okay, uh, of rupees 900 payable at the end of each year. So rupees 900 payable at the end of each year means R is equals to 900, it is given, and P, we have to determine P, and R is also given. Okay, now if the money is at a rate of 5%, so here I is equals to 5%, mean 5 upon 100. So these three values we have to use. Okay, so just use this formula, which is P is equal. Okay, one more thing, payable at the end of each year. So you have to check in each question that the amount is payable at the end of each year or from the beginning of each year. So here at the end of first year, so we will apply type 1 perpetuity formula. P is equals to R upon I. Clear? तो यहाँ पर P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. R के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 900. I is equals to 5 upon 100, 5%. So P is equals to 900 into 100 divided by 5. So 5 ones are 5 twos are 20, so it is 20. So the perpetuity will be 9 twos are 18, and this is 1000. So 18,000 will be your answer. Clear हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so the question number 2 is find the present value of perpetuity of rupees 500 payable at the end of each quarter. So rupees 500 at the end of each quarter, correct? Each quarter. Okay, now it is saying that if the money is worth is uh, is worth 8% per annum. Okay, so I is equals to given to you, it is 8%, that is 8 upon 100. Okay, now we have to find the present value of perpetuity, so we have to find P, and the So we divide the quarter also, no, in I. yes, huh, sorry. So like 8 upon 100 will not write, no, we'll have to consider like we divide when
interest is given and we multiply when time is mentioned. So like here quarter is given. Yes, actually, we have two options for this. First, we can divide the percentage for the quarterly interest rate, first approach. Second, we can shift the amount which we have paid in the yearly approach. So, I think we should go for the second approach, rupees 500 for each quarter. So, the annual repayment, that means R, will be equals to 4 times this amount, that is 500. So you will get 2000, because we have 4 quarter in a year, so we will multiply 4 with this 500 quarterly income, correct? Because we should focus on overall yearly. Yes. uh, And sir, if suppose 6 month duration is given to us, so it will so be 2. we will multiply by 2. We will So calculate. Yes, yes, sir. we will So like, calculate the annual repayment only like that. yes, sir. Yes. So, but for example, when it is given to us monthly, at that time we will consider it 12. Yes. But for example, if it is given to us that calculated for 2 months only, so we will again take 2. Yes, we will take two, but in that case, we have to change this value. For in that case, it will be changed. So, but like for 6 months also we'll take 2, and for 2 months also we will take 2. No, no, no. For 2 months, we will take 6, because if 2 month of repayment is given to you, you will multiply by that with 6. Then only you will get the annual income. Correct? Because you are getting bi-monthly repayment, so you will multiply by 6. And if it is 3, Then we will multiply by 4. 3 means it is quarter. Three yes. monthly payments means quarterly payment. Okay. ओके सो रीपेमेंट जितने भी दिनों के बाद आपको मिल रहा है, आप उसको एनुअल रीपेमेंट में कैलकुलेट कर लो. यहां पर जैसे एनुअल रीपेमेंट क्या हो गया, 2000 हो गया, करेक्ट? सो परपेचुटी, नैना क्लियर है ना ये? Yes, sir. सो परपेचुटी फाइंड आउट करना है. P इज इक्वल्स टू R अपॉन I. सो R की वैल्यू यहां पर हो गई 2000 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू हो गई 8 अपॉन 100. सो यू विल गेट 2000 into 100 divided by 8. 8 ones are 8, 2s are 16, 8 5s are 40. I think it will be 250 into 100. So the perpetuity will be 25000. This will be the perpetuity. So, Clear? so question can be asked on the basis of the calculate for 2 months or 5 months, 7 months. Perpetuity. Yes, sir. No, actually, perpetuity is that initial capital which you are putting for infinite duration. It will be fixed. So, what does this means? It means when you put 25,000 in a type of deposit, then you will get an quarterly income of rupees 500 for infinite times with that. Yes, so this is understood. Like I'm asking in the question, can it be asked like for 2 months or 5 months, 7 months in this way? Or like it will be quarter, monthly, and semi-annually? Usually either it will be monthly or half yearly or quarterly. Usually it is like that, because in practical situations also, the bank repayments, in case of bank, the interest payments are based on monthly, quarterly, or a half yearly or yearly basis. Yes, sir. And sir, if it says annually, then we will not multiply or divide anything, no? Yes, and then the same formula will be used directly. Okay. Okay, start करें next question. So now the question number 3. What is question number 3? Question number 3, find the present value of perpetuity of rupees 300 payable at the beginning. Now, what this question says, the at the beginning, rupees 300 for 6 months. For 6 months. Clear? So the value of R will be 300 into 2. So R will be equals to rupees 600, because it is half yearly repayment. So the annual repayment will be rupees 600. Correct? Now, if the money is worth rupees, I is also given. I is equals to 6%. That is 6 upon 100. Now, the question says that from beginning.
from beginning. Okay, so from beginning, it means this formula will be used. P is equal to R plus R upon I. Okay, now put the values. So P is equals to R. The value of R is 300 plus 300. No, not it is 300. It is 600. Na 600. Just wait. No, it's sorry. The value of R we will take 300 here. Okay, and here it will be R. Here it will be 600. 600, actually little bit confusion in case we change the values in annual income. Okay, so we have to keep all these things in our mind. Can you please explain again why we are taking two values of R? एक्चुअली देखो क्या है नैना, यहाँ पर ना जब बिगिनिंग वाला केस होगा ना, तब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ये जो इनिशियल अमाउंट है ना 300 का, ये हम बिगिनिंग में ले रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो आर है ना, यहाँ पर ये वाला 300 वाला अमाउंट यूज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने एनुअल रीपेमेंट्स कंसीडर किए, तो इसलिए उसके बाद वाली जो आर की वैल्यूज है ना, उसको हम 600 कंसीडर करेंगे। जो फर्स्ट वाला आर जो है ना, ये फर्स्ट 600 जैसे हमने डिपॉजिट किया इनिशियल अमाउंट, तो वो जो फर्स्ट अमाउंट है रीपेमेंट में हमने ले लिया वो 300 है। उसके बाद हम एनुअल अमाउंट 600 का कंसीडर करें, इसलिए वहां पर आर को 600 लिए। ओके Yes, sir. ओके, so P is equals to 300 plus this value will be 100 into 100. 100 into 100, that is equals to 10,000. So you will get 10,300. ये अप्रोच है। या तो एक दूसरी अप्रोच यूज कर सकते हैं, जैसा इसमें इंटरेस्ट रेट को हाफ ईयरली कैलकुलेट कर ले, उसमें आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी उस केस में। ठीक है नैना, वो बताऊं क्या, वो कंफ्यूजन हाँ अगर। दीदी, हाँ बता दो एक बार। देखो दूसरा अप्रोच क्या है कि आप ना इंटरेस्ट रेट को मतलब रीपेमेंट अमाउंट को चेंज मत करो, जो भी दिया हुआ ना आर की वैल्यू फिक्स ले लो, आर इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका पेमेंट हो रहा है वो 6 मंथली पेमेंट हो रहा है, और ये जो आपका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो ईयरली इंटरेस्ट रेट है। क्लियर, तो आई की जो वैल्यू है ना उसको चेंज कर दो। अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट 6% है, तो हाफ ईयर मतलब 6 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 6/2% होगा, like this, so it is 3%। करेक्ट, अब आई की वैल्यू चेंज कर दो। अब फॉर्मूले में ये फॉर्मूला जब यूज करोगे, P इज इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन 100 आर अपॉन आई, सो इस केस में P इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 300 प्लस आर, R means again we will take same value, that is 300 divided by 3%, that means 3/100. So P is equals to 300 plus this is 30,000 divided by 100 divided by 3 means 10,000. So you will get P is equals to 10,300. तो ये दो तरीके हमारे पास है, एक तो या आई को चेंज करें या आर को चेंज करें, तो दोनों में से जो भी अप्रोच यूज कर सकते हो। बट आर को चेंज करने में ये जब इनिशियल रीपेमेंट होता है ना, फर्स्ट बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, तो उस केस में ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ओके यस सर। हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4, what is the amount received at the end of every 6 months if rupees 72,000 kept in the bank? So in this question the value of P is given to you and it is rupees 72,000, correct? And interest is per annum, so per annum interest is given and you have to calculate the half yearly amount. So what we can do, we can reduce the interest for half yearly. So the initially the interest was 8% annum. Okay, if we reduce for half yearly, so half yearly interest will be 4% per 4% half yearly interest. Okay, like this. So use same formula, P is equals to R upon I. Here the value of P is 72,000. R के प्लेस पे R रहेगा, I के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4/100। क्लियर, ये 4/100 वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी,
So 72,000 into 4 divided by 100, that is equals to P. So ये दो जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे. 4 into 72. So P will be, sorry, R will be equals to 0. 4 2s are 8. 4 7s are 28. 2880. ये आपका हाफ ईयरली रीपेमेंट होगा. क्लियर हुआ ये चीज? अगर एनुअली रहता तो 8% से ही कैलकुलेट करते. अगर एनुअली रहता ना तो कैसे करते बताऊं. तो सेम फॉर्मूला यूज करते. आर अपॉन आई. पी की जगह पे कितना आ जाता है 72,000. आर के प्लेस पे आर रहता, आई के प्लेस पे 8%, मतलब 8/100. कैलकुलेट करते तो आर की वैल्यू 72,000 इंटू 8/100 आ जाता. ठीक है. तो ये दो जीरोस और ये दो जीरोस कैंसल. आर की वैल्यू आ जाती 0. 8 2 16 6 8 8 7 56 प्लस 1 57. 5760 ये आता. ये एनुअल रीपेमेंट होता. अब इस एनुअल रीपेमेंट को डिवाइडेड बाय 2 कर देना. तो 5760 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 2880. तो ये हाफ ईयरली रीपेमेंट हो जाता. समझ में है? मतलब 8% से कैलकुलेट करते ना तो एनुअल रीपेमेंट मिलता. उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे ना तो हाफ ईयरली रीपेमेंट हो जाएगा. ओके. नैना क्लियर ना ये? यस सर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट rate of interest a present value of perpetuity of rupees 300 payable at the end of each quarter will be 24,000. ओके. सो यहां पर आपको आर की वैल्यू दी हुई, क्वार्टरली वैल्यू दी हुई है ₹300 पर क्वार्टर. ओके. पर क्वार्टर. ओके. और परपेचुएट अमाउंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इनिशियल अमाउंट ₹24,000 ये दिया हुआ है. ओके. ओके. सो आप सेम फॉर्मूला यूज करो. P इज इक्वल्स टू आर अपॉन आई. ओके. यहां पर भी हमारे पास दो ऑप्शन है अभी क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा यहां पर. अगर हम आर की क्वार्टरली वैल्यू ले रहे हैं तो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा. सो 24,000 इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू हो गई 300 अपॉन आई. सो आई विल बी इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 24,000. सो ये दो जीरो कैंसल. 3 1 सा 3 8 सा. सो इट इज 80. सो आई इज इक्वल्स टू 1/80. ओके. परसेंटेज में आपको निकालना है तो इनटू 100 कर दो और यहां पर क्या लग जाएगा, परसेंटेज लग जाएगा. सो आई इज इक्वल्स टू, I think it is 2 5s are 2 4s are 5/4%. Okay, but this 5/4% is quarterly interest, correct? Or we have to calculate annual interest. So multiply this value with 4. So the annual interest will be rupees will be 5%. Correct? यस सर. Okay. सर कैन वी स्टॉप टिल नाउ? ओके. ठीक है. रिमेनिंग जो दो क्वेश्चन है वो आप दोनों ट्राई कर लेना. क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 6 और 7 अटेम्प्ट करना. हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं डाउट में फिर लूंगा. और जो बाकी जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की ना उसको भी एक बार कंप्लीट कर लेना. ओके. सर ओके. हाँ. वी विल बी हैविंग क्लास टुमारो. मैं एक बार शेड्यूल चेक करता हूँ, मैं बताता हूँ. ठीक है. यस सर. ओके. थैंक यू. Thank you, sir. ओके. वेलकम.